Right, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the first lecture on signals and systems. Um, Today we will just get to know the course ourselves, me and you, yes, and then maybe discuss a little bit vocabulary of the course. हर field की एक vocabulary होती है, right? If you see two doctors, medical doctors talking to each other, थोड़ी देर बाद आपको समझ आना बंद हो जाएगा, right? Because they have their own vocabulary. Lawyers talking to each other, शुरू में ही समझ आना बंद हो जाता है, right? So every field has its own vocabulary, or vocabulary is very critical to really be able to communicate in that field, right? So every course has its vocabulary also. So वो हम देखेंगे इंशाल्लाह आज. But let's get started with introductions, me, you, and the course. So probably you know I did my BS here in Engineering Sciences, same faculty, 2002. I joined as on a first choice. I liked the idea at the time. It wasn't this green. तस्वीर तो relatively नई है. ज़्यादातर ये दरख्त अभी छोटे-छोटे थे, right? That's before many of you were born, I think, or I don't know. 1 year before that. Yeah, okay. So, yeah, I'm that old. Okay, so then I worked in Saudi Arabia for a couple of years, did my master's there also in systems engineering, and then went on to Sweden in 2006, where I was a PhD staff and postdoc. Then I worked with Ericsson Research for around 4 to 5 years, working on 5G and next generation Wi-Fi, patenting ideas there. So we have some patents in the 5G and the new Wi-Fi that we will be using, 11AX. Most of the routers currently are 11AC. The next ones in Wi-Fi are 11AX. So I have worked extensively on that. And then I went back to Saudi Arabia because my parents had been there since '89. So stayed there a couple of years and then came to Pakistan in 2020 September. Interest badminton, bowling. Hard to do bowling here in JK, but Yes, sir, please, sir, वो describe. हैं? Bowling area में describe. मैं खुद- ट्राई है ना मैं खुद करते हैं कुछ नहीं मुझे अच्छी नहीं आती बस थैंक यू right okay so yes I'm into literature a lot, reading, writing, and I write poetry, short stories, so you can find me online by my pen name. You can ask me later. Roles as a teacher and a researcher. So I have extensive experience in teaching signal systems. Here also cover many times probability and statistics and many other courses for a lot of modern engineering courses, and then there some of them are graduate courses. Perhaps some tutorials I have given in Saudi Arabia and in Sweden also, and supervised various graduate students. So pretty good idea of these fields. Yeah. Now, as a researcher, mainly I am this expert of this statistical modeling of signals and systems. Right? And it's a very broad category. It's like the mathematics of signal and system. And as you will see in this course, signal and system does not mean this electrical signal or system. A signal can be a recorded table of, let's say, stock market indices. That's a signal. Yeah? Then how do companies put money into it? How they take it out? That's a system. Okay. So you will realize that this is a very broad field. It's the mathematics of a lot of things that we do in the world. Okay. So because of that, I've been able to work in various fields from spectroscopy, spectrum estimation, communications, and control. And one of my research projects, the reason I'm mentioning it today, I will show you, and then I will show you again in the last lecture of the course, inshallah, right? And hopefully, if you're still with me by then, you will understand what I show you now far better. अभी मेरा गोल आपको वो समझाना नहीं है, जो equations में आपको कुछ दिखाऊंगा. It's just to give you a trailer. So one of the projects I did, this was funded by Welcome Trust. Welcome Trust, you know, Welcome वो जो उनकी medicines आती हैं पाकिस्तान में, pharmaceutical है huge. And one of the things they were concerned about is the European countries give a lot of
funding to, let's say, developing countries, especially in Africa, for medicine. Yeah. Now the local leaders there, or even here sometimes, they embezzle the funds. Yeah, पैसे दे देते हैं, and then they throw fake medicines into the market. अब अगर leader ही ये कर रहा है तो कुछ नहीं हो सकता, right? So the only options available to the let's say officers of European Union or World Health Organization was to, let's say, raid different pharmacies, raid different customs sections, and take samples of the medicines, and take those samples to a lab, then grind up the sample, and then put it in a NMR machine. You know what's NMR? MRI का पता है? You know? So MRI is an application of a physical concept called NMR, nuclear magnetic resonance. Okay, so you throw radio frequency at a compound. You put the compound in a very strong magnetic field, yeah, and the compound gives a vibration. The molecules give a vibration, and you collect that vibration, and that vibration is a function of the nature of the molecule. So you can identify those the multiple periodicities होती हैं, उनसे आप बता सकते हैं कि कौन सा molecule है, okay, by having reference samples. The problem with that is that process is very slow, and by the time they realize कि ये sample नकली था, पीछे सारा change हो चुका, असली वाला रह गया. So it becomes very hard to catch that. Yeah. So they gave us this target to make a device and do something where they could just take a briefcase size thing to the spot on the or to the pharmacy, take a box of these paracetamol or some medicine, put in there, set there, is it claimed to be paracetamol, press enter. What are the chances that this is paracetamol? Or the active ingredient in there is paracetamol, right? So if the chances are less than 50%, then they can take it to the lab, right, and check. But until then, they already know, okay, we tried several samples, all are coming out to be less than 50% chance that this is paracetamol. There is something fishy here, so they can already start sealing the lab and then, or the pharmacy, and then do that. So this was a joint project with King's College London and University of Ljubljana in Slovenia, and from Sweden, Center for Mathematical Sciences in Lund University. I was the team with the team who were handling the mathematical aspect. Yeah? King's College was the team of chemists, and Ljubljana was the team of physicists. So this is also an interesting thing, very much relevant for engineering sciences. In real research and a lot of real projects, the teams are very much multidisciplinary, mixed होती हैं. ज़ाहिर हर एक का अपना strengths हैं, but a person who can rather conveniently understand at least enough of the other, right, कि उनका एक bridge बन सके, वो easily discussions हो सके, to exchange information and all that, that person is very useful in research and in industry. And in sciences, maybe a lot of what we teach you is based on that idea. The multidisciplinary हम बार बार कहते हैं ना, that is the idea, and you will realize inshallah when you are in the market or in research that the ability to peek beyond borders of disciplines is very useful. Yeah. So I found that very helpful in talking to the guys in King's College, the chemists and the physicists in Ljubljana, and we decided to go for NQR. Now, what is the difference between the two techniques? So, in NMR, which I just described, you use a strong magnetic field. MRI machine का होता है, medicine आपकी clinical imaging में use होती है. देखिए किसी कैसी होती है? Use होती है. क्यों use होती है? Yeah. Magnetic field. They have to create a very huge magnetic field. और इसीलिए आप बार बार यूज़ भी नहीं कर सकते उसको, इतना वो स्ट्रॉन्ग है, इट्स सो स्ट्रॉन्ग दैट इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, राइट. सो द डॉक्टर हैज़ टू डू अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इस पेशेंट को फ़ायदा है 4 स्कैन्स का या नुकसान है, राइट. सो बट व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड? द मैग्नेटिक फील्ड इज़ जस्ट लाइक पुराने टाइम्स में वी यूज्ड टू गो इनटू स्टूडियोज़, अब तो खत्म हो गया वो कल्चर, और पासपोर्ट वाली तस्वीरें तो बड़े से वो दो लगाए थे, राइट. व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दैट?
illumination, right? Exposure reduces. Clarity, exposure बढ़ता है, yeah? So clarity आती है कि ये किसकी शक्ल है. अंधेरे में ले लें तो आप गलत बंदे को पकड़ लेंगे, right? So clarity, you get the signature, you get a clearer signature. Einstein है या Hilbert है. That magnetic field is playing the role of those two lamps there. It जो compound की जो properties है ना, ये इसको और extend करता है, and then when you throw a radio frequency at it, it vibrates much stronger. और clarity बहुत easily आप बता सकते हैं. Problem क्या है? Problem ये है कि you cannot do it in the, let's say, on the spot, and you need a huge magnetic field. That magnetic field itself has health issues related, so आप ये बार बार यूज नहीं कर सकते. So there is a cousin of this called NQR, nuclear quadrupole resonance, which takes away the magnetic field. Okay. So many nuclei, including nuclei of explosives, TNT, जितनी nitropes सारे, and a lot of chemical compounds used in medicine, active ingredients, and उनके भी, they have natural magnetic field in them. थोड़ा सा होता है उसमें, right? So you can throw a radio frequency and still get this signal that you would get here. Problem is that the signal would be extremely weak. ऐसे अंधेरे में किसी की तस्वीर लिया, वो modern signal processing और image processing अभी भी वो contours बना लेती है, कर लेती है ना, कौन है ये राफी. लेकिन without that, अंधेरे में ले ली तस्वीर, you cannot tell exactly कि अब कौन है. Similarly here, the actual signal is lost. We are dealing with minus 30 dB, that's like thousands of times stronger than the signal. So noise, the background noise is too strong. Okay. So what do you do then? Then you need us, the mathematicians, the people who work with signals and systems, right? And what we know is that even if a particular signature is very weak, it's lost in noise. If you know important characteristics of that signature which noise cannot have, then you can still mathematically find with good probability is that particular signature in here or not. Okay. So what we did, we found several properties of that signature. We modeled that amplitudes with the echo decay, the spin decay, all that we modeled it. We allowed for uncertainties, and we were able to get a very good model of what the signature should be. And once you have that, you can apply a lot of, I'm not putting that here, but a lot of estimation theory from mathematics to find that signature. So you model the signature, and then you write algorithms to find it. And we were able to demonstrate this to Wellcome Trust and providing them several prototypes for this. So by the end of the course, I will come back to this equation, and you will have a slightly better idea, especially when we look at Fourier transform and all that. What is this summation? What are these exponents here? E to power. सारे तो नहीं हम करेंगे ज़ाहिर है, but this is to give you an idea of the kind of work you can do with what you learn here. Yeah. So you guys, I guess, are in your second or third year mostly, right? And आप स्ट्रीम ले चुके हैं? Yes, sir. ले ली. Photonics और simulation. So what you learn here is useful for all fields of modern science. Okay. What we learn here does not care if the system is a simulation, it's an algorithm, or it's a laser filter or a laser device. What you learn here applies to everything. आप उसका mathematical abstraction बना लेते हैं, ठीक है? Then you work with that abstraction, use the results or whatever insights you get, and then return that to the device. Okay, so it's useful for all of you, and inshallah I think you will find the course interesting.
So the course. Now a bit about the course. What are we going to learn in this course? Just a quick overview. So let's say towards the end of the course I record some of you saying this. Yes, this is voice record करते हैं मोबाइल में, वो आता है waveform आती है. This is my attempt at making that waveform. Right, so let's say you say this, and what it's saying is I hate this course. Yeah? And let's say you say it 3 times, you hate it so much. Now we know that from one utterance to another there can be interferences, which रक्षा गुजर गया टक 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 noise आ गया अंदर. Yes, or even if there is no noise, same person saying the same thing twice, exact वो signal same नहीं आता. Right, there are small variations. So firstly we would like to identify, okay, what is this thing, how do we write it mathematically, this kind of thing. Yeah? Okay, so that will come here. What is a signal and what is a system from engineering mathematics perspective. Right? वैसे तो आप बताएं, आप कह रहे हैं सिस्टम खराब है, वो वाली उसकी बात नहीं हो रही. Yes? और गलत सिग्नल मिल रहे हैं, उसकी भी बात नहीं हो रही. Yeah? This is mathematically what is signal and system. यहाँ पे I have already drawn a system also. You are a system. This room is a system. We'll see that later. Yeah. So what we want to say is, okay, how do you mathematically describe a signal and system? And that's in your first chapter of the book. Signals, कोई ये सारे signals हैं, right? It can be waving of a hand, speaking. ये gong जो बजाते थे Chinese, that is also a signal from the red Indians. फिर वो आया, तो ये थोड़ा time के साथ साथ. Now these days we think of signals like this, but it's not limited to actual signals. We'll see that also. Yeah. What about systems? Well, this room is a system. If you have some sound systems connected, then it becomes a sound acoustic system. In optics, you will study waveguides. Yes, those are systems. They are guiding the wave. The laser input is a signal, but what the guide or the filter is doing to it is a system. Yeah, your mobile is a collection of many systems. Subsystems are similar, right? A simple speaker is a system. Your ear is a system. So we will again see that in chapter 1. That okay, what are these common types of इतने सारे signal systems, सब कुछ ही signal system है. Then we need to be able to classify it, right? To see, okay, what are the common types that come in handy when we want to talk about signal systems mathematically. Again, that is an introductory thing in chapter 1. So we will come back to all of these. Yeah, ये दूसरा तो आपको मैं जो book की outline है ना वो दिखाना चाह रहा हूँ. So for example, common type of signal system, ये तो आपको पता है इन दोनों में क्या फ़र्क है? What's the difference? एक एनालॉग है, डिजिटल है. एक एनालॉग है, एक डिजिटल है. टाइप्स हो गई ना. You already classify. Why do we classify? Because it becomes easier to solve things. उनके लिए आप tools अलग-अलग बना लेते हैं, right? So one of them is discrete, the other is continuous or analog or digital का कर लें. We will see exact difference between discrete, digital, analog. वो भी बाद में आएगा, right? So for now, just an idea. Then we want, okay, what are some useful properties of signals and systems? Yeah, so we will cover some of those. यहाँ पे एक मिसाल मैं आपको सिंपल सी दे रहा हूँ. This pencil standing on its tip is a system. Yes, the painting is a system. What are the properties? इधर से अगर आप इनको एक दोनों को हल्का सा नाच दें, क्या होगा? पेंसिल के साथ क्या होगा? तो उसके साथ क्या होगा? वो नहीं गिरेगी, सिस्टम सपोर्ट. तो क्या प्रॉपर्टी है इन सिस्टम्स की? अनस्टेबल. एक स्टेबल है, एक अनस्टेबल है, right? So already you are classifying system. There is one stable system, there is another one is unstable system, right? So ये सिर्फ वैसे आइडिया देंगे, लेकिन this is what we want. What are some useful properties? आपने already बताया दो तो बता देना. एक signals की it's discrete or digital or analog. Then there is stable or unstable. ये बड़ा important होता है systems के अंदर. आपने you're going to work with a system
and you haven't established if it is stable, और आपने input लगा दिया तो क्या होगा, जलने की smell आएगी, right? It was unstable. So what you need to do first, establish is this system stable, can it handle an input or not? If it's not stable, what can I do? क्या इसमें कोई ब्रेकर लगाने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है, right? So that's why you need to be able to identify, और ये तो मैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी बताई है, there are lots of properties of signals and lots of properties of systems. In this course we will cover the most common ones, right? Again वो chapter 1 में already आ जाएगा because it's rather simple stuff. Then the bulk of the course begins. 4 major ways of modeling and analyzing signals and systems. How do you model them and how do you analyze them? अभी तक आपने सिस्टम्स की मॉडलिंग के हवाले से क्या पढ़ा है? पढ़ा हुआ है, पढ़ा पढ़ा के थक गए हैं डॉक्टर उस्मान अभी सर्किट 2 में भी आपने किया है, हमने टेक्निकल एनालिसिस किया था, बनाना तो और बात है. No, you model the system. जब when you wrote the equations of this current going through the RLC circuit, लिखी थी equations I C dV by dt plus वो मॉडल था ना उसका, right? And then you analyze that model कि कितनी फ्रीक्वेंसी को जाने देगा, कितनी को रोकेगा, किया था ना. So differential equations में भी आप करते हैं. Actually most differential equations are models of some system. But in this course we will look at a different way of modeling. Okay? That modeling जो आप करते हैं उसमें differential equations वगैरह में अक्सर that modeling is called ab initio or from the first principle. It uses all the physics or biology of that system. What we study in this course is independent of that. इसमें बहुत power है. It doesn't care कि the system is mechanical, it's physiological, ये भी system है, arm input मिल रहा है यहाँ से, ये push कर रहा है, yeah? So it doesn't care if that's an atom or stock exchange index, it doesn't care. जो हम इसमें मॉडलिंग पढ़ेंगे, it only cares about input क्या आया था और output क्या आया, उसको ये यूज़ करेगा to model, make very generic models of system. जो आपने अभी तक पढ़ा है, that was very specific, and we will see why that यूज़ करते हैं लोग उसको lot of situations. But we will see when we come to this, those have limitations. हर चीज़ की फिजिक्स हमें नहीं पता होती, जब पता भी हो तो equations become so hard that working with them and solving them आप पागल हो जाएंगे. इसी चीज़ की एक्सटेंशन है फिर आगे neural networks, machine learning, right? Most of that does away with all the physics and right, बस सैंपल दे दें, रिजल्ट बता दें, neural network को भेजते जाएं, वो ट्रेन होते ये हैं. फायदा हो गया ना कि आपको अगर लेट्स से उसकी प्रॉपर्टी सिस्टम को नहीं पता लगा फिर भी उसको मॉडल कर सकते हो, तो एग्जैक्टली. प्रॉपर्टी से मुराद, जहाँ भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो आप बता रहे हैं, यू डोंट नो द एग्जैक्ट फिजिक्स और एग्जैक्ट बायोलॉजी और एग्जैक्ट मैकेनिक्स, जो भी उस जिस से भी वो आ रहा है वो आपको नहीं पता उसमें, ठीक. अ लॉट ऑफ स्टॉक मार्केट में ह्यूमन साइकी इन्वॉल्व होती है, पैनिक में बेचते हैं लोग, राइट, या जल्दी में ग्रीन में खरीद लेते हैं, क्या उसके क्या लिखेंगे बहुत मुश्किल है ना. सो यू वांट टू बी एबल टू डू अ ब्लैक बॉक्स, इनपुट आउटपुट, हिस्ट्री क्या थी, उस हिस्ट्री को यूज़ करके प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल सिस्टम, ठीक है. सो now neural networks take that one level ahead. So ये कोर्स अगर आप ठीक से कर लें तो I guarantee you कि आपके लिए going into machine learning, AI, neural networks becomes much easier because they are a natural extension of this course. Okay? और those of you in photonics, don't be confused कि मैंने क्या करना है AI का. All of us are gonna be using it, right? और अच्छी बात ये है कि आप यू नॉट टेक्नीशियंस, यू नॉट प्रोग्रामर्स, यू आर गोइंग टू बी इंजीनियर्स, इंशाल्लाह अगर आप आगे इसमें जाते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज़ में या एकेडमिया में, सो यू शुड बी द वंस हु एक्चुअली आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट्स अंडर द हुड, राइट. आपको सिर्फ न्यूरल नेटवर्क कोड दे दिया और चल गया, नहीं चला चलो बंद कर दिया, ऐसा नहीं. यू शुड बी एबल टू मॉडिफाई दैट, राइट, वर्क विद इट. सो इसलिए नोइंग दीज थिंग्स इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. So the 4 major ways we will look at is firstly in time domain, that will be in chapters 2 and 3.
using Laplace transform, that will be in chapter 4, Z transform, that will be in chapter 5, and the father of all of these, Fourier, chapter 6, 7 and 9. Okay, so course तो पूरा हो गया मेरा. 1 2 3 4 yes. चले फिर छोटे खत्म करें. Right. So modeling के वाले से again I have already given an idea. Why do we model things? फायदा क्या हो? Let's say a friend of you is sending you measuring something and he is sending you this data and you are noting it down. सारा लिख रहे हैं कि ये इस जगह पे टेम्परेचर है या जो भी वो मेजर कर रहा है वो ये रीडिंग्स आ रही हैं. ठीक है. So once you take these readings you realize that it was just cosine of theta. Right. उसकी वैल्यू आप उससे कहते हैं यार तुम सारा कुछ बता रहे हो, एक बार पढ़ के थोड़ा सा देख लेते कि कोसाइन बन रहा है, मुझे बस बता देते कि उसका फेस क्या है. राइट. सो आई वुड जस्ट मॉडल इट लाइक कितना अच्छा वो कॉम्प्रिहेंसिव हो गया ना cos theta. That's it. Yeah. So this is a very basic or toy example of modeling. You don't need to collect all the data, all this history. Whenever you can represent something succinctly in a very efficient manner, you should do that. So we will look at this modeling thing in great detail. ये तो वैसे एक interesting मिसाल दी. ये again as we go through the modeling here of signals and systems, we say we will also be analyzing them. And to analyzing these things, it's not possible without looking at the interaction. इसीलिए उनके अंदर ही वो आता रहेगा साथ साथ. Chapter 2 to 7, we will see how do signals and systems interact. Okay? Interaction उनका critical है to understand things. Okay. So for example, I used to give this example in Saudi Arabia. There, you're transmitting over a noisy channel. Yes, the signal is this image. Again, remember that signal is not a signal. वो ये current नहीं जाना है. It can be a stock market or anything. So here is this image. Okay, noisy channel में जा रहा है. अब what you receive noise भी है, ये भी है. Now is it तो है या ज़ो है क्या है? अब वहाँ पे वो एक डॉट तो है पर नॉइज भी है. So is it one of those guys? कैसे बताएंगे? Right? So कोई बताया नहीं. What I'm telling you is that signals and systems interact with each other. Information of how this happens can help you make smart decisions. How? Maybe you decide that it's not a good idea to use tau and zau as symbols. वो इतने सिमिलर हैं. आप आइन और tau यूज़ कर लें. उनको तो कंफ्यूज नहीं कर सकते इतनी आसानी से. काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा नॉइजी चैनल हो कि वो आइन को tau बना दे. बहुत मुश्किल है ना. So that already gives you an idea. या आप I don't know आपने कोई कम्युनिकेशन का थोड़ा बहुत पढ़ा है BPS के QPS के कम्युनिकेशन का आइडिया है 5G वगैरह का कुछ थोड़ा बहुत. उसमें सिंबल्स होते हैं ना वो जो भेजते हैं आप वेव फॉर्म्स होती हैं. एंड वी ट्राई टू कीप दोज वेव फॉर्म्स ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. कि वो एक को दूसरी में लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, इसलिए तो डिस्टिंग्विश करते हैं. सो दे आर ऑलरेडी यूजिंग दिस रिजल्ट बट दिस जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ ability to analyze, study the interaction of signals and systems helps us design better systems and design better signals. Okay, so जहाँ आपके पास कंट्रोल है, जाहिर है जहाँ आपके पास कंट्रोल नहीं है, सिर्फ maybe you have control over the signal only, not the system. Now maybe you have control over the system only. Signal is just gonna come from external source. Okay, then you can plan for it. Yeah. So, but you should be able to think of that. Okay, some important business: 80% attendance, institute policy, textbook, Lathi and Green, RA, Oxford University Press किया 2018 का है ये. Contact. I've already emailed you guys the outline today, so you have all these things in there also. So nothing to worry about. Learning plan to help you learn lectures. Lectures का concept होता है to give you the conceptual underpinnings of the field. Yeah? वो चीज़ जो आपको बुक में डायरेक्टली इतनी इजीली नज़र नहीं आती. Yeah? उसका क्रक्स आपको देना. Yeah? But with that you need to help me by practicing that. Yes?
collecting that information and practicing it. So वहाँ पे to then give you incentivize you, we have quizzes and assignments. We'll have a presentation. There is a complex any problem in this course, so वो आप करेंगे and you will also present it. The goal is to develop your soft skills. I can tell you this with great confidence that in recent times the scales have tipped. पहले होता था competence and soft skills बराबर, अभी थोड़ा सा soft skills की तरफ ज़्यादा हो गया. Why? Because a lot of competence is being automated. Right? मैं आपको Euler's formula भूल गया तो मैं अभी खोले गूगल का भी निकल आएगा, याद आ जाएगा क्या. So it doesn't mean the competence नहीं होनी चाहिए. I'm just saying the scales are a bit tipped towards soft skills. Okay, so please इसको भी seriously ले. It's not a punishment to ask you to come here and present your work. Take it as an opportunity, because you will have to do this over and over again. Even this lecture by me is a presentation to you, right? So आपका इंटरव्यू हो गया, आपने जो CV भेजना है, आपने जो ईमेल लिखनी है, मतलब कुछ कैंडिडेट्स की ईमेल पढ़ के मेरा दिल चाहता है कि उनको जवाब ना दूं. ठीक है. सो हाउ डू यू लर्न दोज थिंग्स? तो प्रैक्टिस करें इस चीज़ का. एंड इन दिस कोर्स वी हैव ट्राइड के इन बकिया कोर्सेज में वी हैव मेड इट मैंडेटरी इन 3rd and 4th ईयर ऑल द कोर्सेज एक्सेप्ट फॉर वो सर्विस अमेरिकन रहेगा. और सबके लिए मैंने लाजमी किया हुआ है कि दे हैव टू इंक्लूड CEP विद प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट और बोथ, या सो दैट आपको मल्टीपल कोर्सेज में मौका मिले. But if you decide not to benefit from it, then आप कुछ नहीं कर सकते. ठीक है. And I can tell you this, communication skills, soft skills है ना, competence वाली चीज़ आप क्रैश कोर्स से कर सकते हैं. ठीक है. Soft skills क्रैश कोर्स से नहीं आती. I cannot change the way you talk or the way you email overnight. कोई भी नहीं कर सकता. ठीक है. ChatGPT से आजकल ईमेल आती हैं हमें इतनी बड़ी, पता चल जाता है, पता नहीं क्या लिखा होगा, अपने काम लिखे होते हैं शायद. बच्चे की समझ नहीं आती इसको क्या मसला है. राइट. सो वहाँ से भी आप पकड़े जाएगी. कोई इज नॉट अ वे आउट. स्मार्ट बंदा क्या करता है, उससे लिखवाता है, उसमें से चीज़ें निकालता है कि मेरे लिए क्या रेलिवेंट है, उसको थोड़ा रीडू करता है और फिर उसका क्रक्स भेजता है. दूसरा बंदा क्या करता है, सेंड एन ईमेल टू द डीन दैट मेरा कोर्स आएगा, और इतनी लंबी आती है, उसमें क्या लिखा. राइट. सो प्लीज़ टेक ऑल ऑफ दीज कोर्सेज. अब आप 3rd ईयर में हैं. CPs will increase, presentations will increase, report writing will increase. Try to benefit from it. ठीक है. बहुत फ़ायदा होगा. Okay. Exams and finals, of course, they help you out. We follow at JIK Institute OBE. Right? क्या होता है OBE? Object Oriented Programming. OBE क्या आता है? TC ने आना है अभी इस साल. क्या बताएगा? Outcome based education. Okay. Outcome based education. What does it say? It says that you start with the outcome. हम चाहते क्या हैं, इन स्टूडेंट्स के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. You start with the outcome and then rewrite everything backwards, right? कि उसके लिए हम इनकी क्या असेसमेंट्स लेंगे, कैसे सिखाएंगे इनको, उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, वो सारा चलना. राइट. एंड every course you take here has CLOs. That's part of the OBE. Okay. So there are program learning objectives. Those are fed into by course learning objectives or all these. So इस course के ये है, it's in the outline also, पढ़ लेना उसको just to get an idea. We want you to be able to apply your knowledge, calculate different parameters, analyze some systems, investigate some problem that will be in the CEP and formally present results. Effective domain है, attend 3 engineering science or technology related seminars. Ideally 1 each, physical, online, recording. Seminars यहाँ भी होते रहते हैं. So and critically analyze their strong and weak points. This is a soft skill also. Okay. एक स्मार्ट इंसान जो है ना, उसको पता होता है कि ये सोर्स रिलायबल नहीं है. ये सारे मिसाइल कहाँ से होते हैं? फेसबुक पे एक पोस्ट लगी, 5000 का नोट ख़त्म होने वाला है, आप सारे जला के खाएंगे. खत्म हो गया. सो
A smart person knows how to critically analyze everything they see or hear or read, right? And then how to extract the most important information in there. Yes. So and आज के दौर में और important हो गया. They say this is an age of disinformation. पहले आई थी age of information, right? वो गुजर गई है. अब age of disinformation आई है और इसमें बहुत सारे नुकसान हो गए. If we are not able to critically analyze things, so to develop that soft skills among in you, इसके भी हमने थोड़े से मार्क्स रखे आपके लिए. Again, I know you can have this written by ChatGPT without attending anything, but again, जैसे मैं पहले कहता हूँ, if you choose not to benefit from these aspects, there's not much we can do on it, right? So please don't choose to do that. ठीक है, क्योंकि इसका कोई लेवल बदल नहीं है. 4 माह आपके पास हैं, 6 कोर्स होंगे, 5 कोर्स होंगे, राइट? उन सब में कुछ सॉफ्ट स्किल्स के पार्ट्स हैं, कुछ कॉम्पिटेंस के पार्ट्स हैं. If you make good use of all of that, after 4 months you can be far ahead of where you are today. Yeah. So please इसका ज़रा ख्याल रखें. फिलहाल कोई questions or thoughts before I go to so we have 2 lectures per week, 75 minutes. Yes. So उसकी वजह से I will start the थोड़ा हल्का हल्का ही शुरू करेंगे vocabulary से, but until then इस part का कोई है सवाल? No. सर कितने सॉफ्टवेयर पर हम प्रोग्राम MATLAB? Mainly in the lab, and the course is free. The CEP is free. You can use any software, but in the lab we focus on MATLAB in this course. But I tell this to the students: programming is not it's not really a skill. It's a sense. You need to get a sense for programming. फिर वो आप switch कर सकते हैं. Doesn't matter. Right? Python में जाना है उसमें जा सकते हैं. जो tool बेहतर आएगा उसको shift कर देंगे. Right? But MATLAB is an industry favorite still. All of my work at Ericsson on 5G and next gen Wi-Fi, the simulators were built in MATLAB, and then sometimes we also use C codes, and we were able to make a bridge between them. So MATLAB is extensively used in the industry, multiple fields. So still a very relevant and useful. और Python में भी अब उन्होंने Python के साथ भी bridges दे दिए हैं. So you can call Python scripts into MATLAB. तो कोई मसला नहीं है. 2-3 अच्छे सीख लें, आपके इंडस्ट्री में जाके 1-2 साल बाद तक कोई और आ चुका होगा, राइट? फिर उसका देख लेना. Once you have the sense, yes, and the understanding of the science or the math behind that, फिर कोई मसला नहीं, राइट? अगर वो वीक है, प्रोग्रामिंग की सेंस वीक है, जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसका कोड है वो वीक है, फिर कुछ नहीं होता, राइट? सो यू हैव टू, ये चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, राइट? टीचिंग स्टाइल वाइज आई लाइक टू इंटरेक्ट अ लॉट विद द स्टूडेंट्स, सो मोस्टली यू विल सी मी लुकिंग हियर. शुरू के कुछ लेक्चर्स यूजुअली आई गिव द होल कोर्स ऑन बोर्ड, बट व्हेन आई जॉइन JIK कोविड का पीक चल रही थी. So first 3 or 4 lectures were online, students were at home, so I made extensive slides. So अब 3-4 lecture में वो use करता हूँ, but we will have discussions. Yeah, इसमें कोई इतना वो नहीं है. But after that we will shift to the whiteboard completely. But I like to interact, and the style is that I'll ask a lot of questions. Yeah? And don't get worried or nervous about that. I don't mean to put you on the spot by asking. It's just that the human mind works better that way. If you ask someone a question and then let them think about it even for 5 seconds, if they cannot give an answer, mostly they cannot, it's fine. But the brain is more receptive to the answer after it has spent some time thinking about it, right? Compared to if I just throw a fact at you, right? So what happens? And so, for example, जो जितने एनिमल्स आज तक अर्थ पे रहे हैं उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? ब्लू व्हेल. यस, इवन बिगर देन डायनासोर एंड ऑल. जितने फॉसिल्स मिले हैं सब में इज द बिगेस्ट, राइट? सो ब्लू उससे भी बड़ा है. ब्लू व्हेल से बड़ा किसी ना कोई मिला है वो
fossil भी कोई किसी भी वो जो आपका Brontosaurus है कौन सा, they're all smaller than the blue whale. It's the biggest thing ever. Yeah. So again, discussing it, asking it, and answering it is more interesting for you guys. Yeah. So we'll do that a lot. उससे आपने घबराना नहीं है. Although ये जुमला थोड़ा सा घबराने वाला हो चुका है अब. Let's see. Lecture 2. Again, this is a rather light lecture, so not much to do. थोड़ा हल्का हल्का शुरू करेंगे. We'll start discussing things. Vocabulary, as I said, understanding, knowing the basic vocabulary of something, even a language, is important. ये आप बताइए क्या है? सर अरबी अगर अरबी लग रही है, उर्दू भी लग सकती है, फारसी. स्क्रिप्ट सेम होती है ना कुछ हाथ जुबान यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम. Yeah, he says that my friends or my beloved's language is Turkish and I don't know Turkish. मसला हो गया. ठीक है, वो बहरहाल उनके दौर में नहीं था, हम तो ऐप पे बोल के बातें कर लेंगे. ठीक है. So the problem is if you don't understand the vocabulary ना, तो communication मुश्किल होता है. Communication किससे आपने करना है? इस कोर्स के हवाले से communicating with me, अगले टॉपिक्स आएंगे. When I'm talking about something after 1 month, if you're not clear on the vocabulary, it will all sound like Turkish to you. Okay. Similarly, when you have to write a report on this course, do the CEP, read the book that's talking to the author, right? तो आपको समझ ही नहीं आई होगी क्या कह रहा है. It will all sound Greek or gibberish in a while. शुरू में थोड़ी सी आएगी. So you need to lock the vocabulary of any field that you work in. So what I do usually is whenever I teach a course, I give a lecture or two on the vocabulary of that course. वो vocabulary कहाँ आनी है वो फिर देखेंगे, right? But if you already start locking it in your notes, trying to understand it in your own way, ताकि आपकी वो language में आना शुरू हो जाए. ठीक है? So let's see. The vocabulary I picked for to get this course started is what is a signal versus system, continuous time, discrete pulse, step, transform, response, convolution. There are others, but ये वो हैं जो हमने इस course के लिए बहुत critical है. Yeah. So we will go through these, some of these depending on the time today. Signal I have already mentioned. So what do you think is the mathematical description or वैसे क्या कहेंगे आप? सिग्नल क्या हो? What is a signal? Transmission of any information. The data levels transmission. All these things are giving some sort of Data information. Even noise is a signal. data बाहर से शोर आ रहा है, उसमें से आप अकेले नहीं हैं इस जहान में, लोग हैं और, right? Even noise is a signal. Yes. So yes, that's it. Doesn't say कि ये electrical आना है या physiological है, mechanical है. Doesn't say, right? It's a set of data or information. Yes. Now, how do we normally represent data or information? Yeah. So we can have tabulated form, data आप collect कर लेते हैं. You can have a model for that, right? Or you can have a graphical representation of that. Yeah? So for us, signal is what? A set of data or information. अब आपकी वो vocabulary शुरू हो रही है इस कोर्स की. वैसे तो आप सिग्नल पता है, वो रोड पे लगा होता है, वो सारे मिलते हैं आपको, डिफरेंट कार जो इंडिकेटर देती है वो भी सिग्नल है. या बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कोर्स, अ सेट ऑफ डेटा और information. And there are many ways to represent that. As I said, you could have that set of data in numbers, you can have it as a model, you could have it as a graphical representation. Most of the signals we do here are usually in these two models, the mathematical model down there, जैसे cos t था, more advanced model, or graphical representation. And in this course, often it is the x-axis represents time, but it doesn't have to. Okay? और क्या हो सकता है time की जगह? Frequency हो सकती है. और wavelength हो सकती है.
रिस्पेक्ट वो फ्रीक्वेंसी का ही कन्वर्ट होगा। इसके अलावा इंटेंसिटी वो तो y axis है, सही है। वो डिपेंड करता है If we want to see the roughness on this board table as a function of this distance, right? So it can be distance, meters, centimeters, वो भी हो सकता है, right? It can be something not even a time or something. It could be just a collection of, let's say, Temperature. survey. So 10 लोगों ने क्या जवाब दिया इस चीज़, right? So it's the t-axis is then people, right? So it doesn't have to be time or distance even. लोग भी हो सकते हैं, yeah? So mostly we will write it like this, but please keep in mind that in most general form, the x-axis can be anything, yeah? Depending on your application. Like here, if you want to see the temperature across a rod, plot करें अगर उसको, तो फिर x-axis is the distance along the rod. System, as I said, all of these are systems. So how do you think we would define a system for this course? कोई ज़हन में आती है definition? सर टेक्निकली सिस्टम हम खुद डिफाइन करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये फ़ोन है, हम इस कोई चीज़ को सिस्टम कह देते हैं, लेकिन इसके अंदर हम चले जाएँ तो छोटी चीज़ को भी हम एक सिस्टम कह सकते हैं। सिस्टम प्री डिफाइंड होता है, आप जिसको स्टडी कर रहे हो ना, वो तो ये वाला सिस्टम हो गया ना। वैसे ओवरऑल सिस्टम irrespective of the physical manifestation of it, right? क्या होगा सिस्टम? Group of things combined together to form a single. ओके, ये भी है, ठीक है, गुड। सो हमारे केस में इवन मोर जनरल देन दैट, अ सिस्टम इज एन एंटिटी दैट प्रोसेसेस अ सिग्नल, इट एक्ट्स ऑन द सिग्नल। प्रोसेस में जनरेट करना भी शामिल है। लेज़र एक सिस्टम होता है, क्या जनरेट करता है? लेज़र बीम। इसमें रिसीव करना भी शामिल हो सकता है, ठीक है। एक फोटो सेंसर है आपके पास, कुछ जनरेट नहीं कर रहा लेकिन रिसीव कर रहा है, और इसमें उसको मॉडिफाई, जैसे वेव गाइड है, सिग्नल इज गोइंग थ्रू द वेव गाइड, या सो इन इट्स मोस्ट जेनेरिक फॉर्म वी कैन से अ सिस्टम इज एन एंटिटी, डजंट मैटर फिजिकल एंटिटी है नहीं है, किस फील्ड से है, डजंट मैटर, दैट प्रोसेसेस ए सिग्नल। और सिग्नल क्या था? कैबलरी क्या था? सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर आप ये एक सिस्टम क्या करता है? इट इज प्रोसेसिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन, राइट? और एज आई सेड, इट कैन बी जनरेटिंग द सिग्नल, सो इट कैन बी जनरेटिंग दैट डेटा, कैन रिसीविंग दैट डेटा, इट कैन बी मॉडिफाइंग दैट डेटा। न्यूरल नेटवर्क क्या करता है? प्रोसेस करता है डेटा को, उसका आउटपुट क्या होता है? डिसीजन सिग्नल। ये कार है, ये कार नहीं है, यस। सो it's an entity that processes data or information. Signal or okay. So that is the most generic form. Now, where is the processing happening in the ear? आपको पता है, right? तो वो collect करता है, receive करता है, अंदर right? ब्रेन है, हाँ, तो फोकस कराता है ना, ये जमा करता है बहुत सारी, right? Information. Okay, so the room, this room is a system. What is happening in this room? My voice is bouncing off the walls, right? Different direction से भी आ सकती है। Light है, light is a system, signal bounce off कर रहा है इस room में। So a lecture hall is a system. Even if you don't put anything else, light तो होती है, वहाँ sound होती है। Acoustic system आपने देखा है, वो जो बनाते हैं, ऑडिटोरियम्स होते हैं, थिएटर्स होते हैं, उनमें बड़ी मेहनत होती है। क्या लगाते हैं उसमें? हमारे ऑडिटोरियम में भी लगे हुए हैं, साइड पे देखें आपने पैनल्स, किस चीज़ के? इस तरह नहीं है, रिफ्लेक्टिव नहीं है, वो नॉइस के उसके लिए। हाँ, क्या कहते हैं? एब्जॉर्बिंग लगा, ऐसे ही है ना। क्यों? अगर उस बड़े हॉल में ये वाली दीवार लगा दें ना, सारा एक्ोज, हॉल इफेक्ट जो आता है ना, वो वाला नहीं, फिजिक्स वाला नहीं, हॉल में साउंड इफेक्ट आता है। सो what is going on? That room, this room, that room is a system. It is processing my voice signal, कर रहा है ना। अब वो प्रोसेसिंग अगर अच्छी नहीं है, यहाँ मसला नहीं है, दिस अ स्मॉल रूम, राइट?
हॉल में मसला होगा, ऑडिटोरियम में प्रॉब्लमेटिक. सो यू हैव टू प्लान, ओके, I don't want these signals to bounce off, right? So you put absorbing material there, वो foam सा material लगाते हैं, that absorbs the reflective signals. कि जो सामने से आवाज़ आ रही है वही आ रही है आपको, या जो स्पीकर से आ रही है मेन वही आ रही है, बाकी absorb हो रही है. So there are wanted signals and there are unwanted signals, right? So all of these are systems. This is the mobile is a digital system, वो भी हम देखेंगे. ये रूम एनालॉग सिस्टम है as far as its reflection of the light or voice is concerned. The analog है. The most modern technology, like almost all of it, is digital systems, right? वो भी हम देखेंगे some of those. This is important, as I've been saying. It can be something physical or just an algorithm. So ये नहीं है कि ये actual में भी exist करता हो. ठीक? Let's say I tell you कि whatever you give me, I'll double it. That's an algorithm. ठीक है? अब क्या है system, वो क्या है? It doubles whatever it gets. You give me 2, I give you 4. Right? Output में 4 देता हूँ. Yeah? So it can be just an algorithm. A neural network is actually, असल में तो नहीं बनाते ना हम. Right? क्या होता है वो? Just an algorithm. But a neural network is a system. क्यों है system? System is what that processes signal. Signal is what data or information. Neural network क्या करता है? जो measurements आपने लिए उनको process करके आपको कोई जवाब देता है, ऐसे ही है ना? So it's a system, and it's not the like एक natural neural network है, वो system physically भी है, right? But the neural network in your mobile or on your computer is an algorithm. It's still a system. तो जो क्या डाटा होगा? है डिजिटल डाटा, ये आप कह सकते हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर प्रेजेंस तो होगी. आई मीन टेक्निकली नहीं भी कह सकते, लेकिन मतलब आप अगर if you just write equations of a system and solve it on paper, फिर आप कहते हैं कि वो इंक जो हमने लिखा है राइट, यानी इट्स नॉट रियली वो जो पर्पस वो तो नहीं है ना, सिस्टम उस तरह सिस्टम नहीं है, राइट. सो then continuous time, discrete time signals, I think, or systems here. So these are हमारी vocabulary में से है ये. So we did signal and then system. Now in signal system a lot of what you see is to do with this continuous time and discrete time. Continuous time system, discrete time system. Continuous time signal, discrete time signal. So what do we mean by that? What's the difference between discrete and continuous mathematics? क्या होता है? कंटिन्यूस में आप डेसिमल में चले जाते हो, मीन कोई वो होता है. डिस्क्रीट में आपके पास अगर मैं चला जाऊँ, let's say I allow you to have value 2.5, 3.5, 4.5, डेसिमल में चला गया. Is it continuous or discrete? Discrete. क्या फर्क है? ये finite sets of number होते हैं और ये continuous में infinite sets of numbers होते हैं. डिस्क्रीट में काउंटेबली इन्फिनिट हो सकते हैं. हो सकता है. सर टेक्निकली आप ये कह रहे हैं कि जो डाटा है उसको अगर आप सही हमारे करीब आ रहे हैं सर आप टेक्निकली डाटा को रेंज दे रहे हैं, तो डिस्क्रीट में उस रेंज के अंदर पॉसिबल आई मीन फाइनाइट नंबर होंगे. यस, दैट इज एक्चुअली बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ को ज़रा लॉक नहीं करते हैं. अभी आप देख लें, कंटिन्यूस मीन्स दैट इन ए गिवन रिजल्ट वो सारे इन्फिनिटी तक हो, in a particular given range any value is possible. Okay, countably infinite sets होते हैं, वो discrete होते हैं, वो infinite होते हैं, वो count हो सकते हैं, तो वो थोड़ा advanced math का मामला है. But if you give me a range and you say that any value in there is possible, 2.2, 2.2, 2.2, 2.0, any value is possible, then you're talking about continuous process, continuous value, continuous data. If you tell me that in a particular range there are gaps, disallowed values, right? अब वो जो allowed है वो हो सकता है infinite तक जा रही है, infinite, लेकिन जो disallowed है वो मौजूद है. As soon as they show up, this becomes discrete time. We will see later what is the difference between discrete time signal and a digital signal. किसी को पता है बात? What's the difference between a discrete time signal and a digital signal?
आपको कहीं एक ही है सर डिस्क्रीट में फॉर एग्जांपल अगर कोई टाइम डोमेन हो तो उसमें हमें एग्जैक्ट टाइम डोमेन उसको फंक्शन को देंगे उस पर हमें आउटपुट देगा कंटिन्यूस में डिजिटल और डिस्क्रीट में फर्क सिग्नल पे रहते हैं जैसे ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है या बनाया हुआ discrete time and digital are two different things. सर डिजिटल में आपकी 0 चल रहा है और डिस्क्रीट में ना आपकी साइन वेव भी आ सकती है, गॉस वेव भी आ सकती है, टाइम वेव भी आ सकती है। आप 0 1 किस एक्सिस पे चलते हैं? सर मेरा जो है ना, आप ये कह सकते हैं मेरे जो मैंने अभी सोचा है बेसिकली आप कह लें कि क्या कहते हैं आपकी जो डिजिटल सिग्नल है ना वो डिस्क्रीट सिग्नल का सा वो है, उसके सबसेट है इसके अंदर। कैसे बात सही है आपकी, क्योंकि आप डिस्क्रीट बड़ी क्लास है उसके अंदर इसकी छोटी digital में है। आप डिजिटल आ जाएगा। वो कैसे? क्योंकि डिजिटल में यही होता है कि टाइम है आपकी जो वाई एक्सिस पर है ना, वो बेसिकली आपका नंबर जो होता है वो बाइनरी में आप कन्वर्ट कर देते हो। ये नहीं बाइनरी हो ना, वही नहीं है वैसे, लेकिन आई मीन टेक्निकली हम जितना करते हैं डिस्क्रीटाइज कर देते डिस्क्रीट हैं। एक्स एक्सिस को डिस्क्रीटाइज करें ना तो डिस्क्रीट टाइम। इफ यू आल्सो डिस्क्रीटाइज वाई एक्सिस, आप कहते हैं सिर्फ ये लेवल्स अलाउड है, अभी यहाँ पे हमने नहीं कहा ये, राइट? दिस एक्स एंड द वैल्यू हियर कैन इज कंटिन्यूस, कुछ भी हो सकती है। लेकिन जब आप सैम्पलिंग करते हैं या जो वो बनाते हैं डिस्क्रिटाइजर बनाते हैं डिजिटाइजर, आप वाई एक्सिस को भी डिस्क्रिटाइज कर देते हैं, सिर्फ ये लेवल अलाउड है। इफ यू आर बिटवीन देम यू आइदर गो अप और डाउन या टू दोज लेवल, सो देन इट बिकम्स डिजिटल। डिजिटल इज अ सब क्लास ऑफ डिस्क्रीट। ओके, सो so students they think they are the same thing. They're not. To get to digital from analog, you need two kinds of processing. You need sampling along time or x-axis, and you need discretization along y-axis. दोनों जब हो जाती हैं, then you are working with digital signal, and the modern devices, all of them work with digital system, signal and so. क्या क्या हमने देख लिया? बस थोड़ा सा सिग्नल देख सर, सिस्टम देख फिर इसमें दोबारा आ सिग्नल्स क्या था? सिग्नल ओके गुड। व्हाट वाज द सिस्टम? एमडीटी होती है जिसको जो सिग्नल्स को एनालाइज करती है, प्रोसेस, राइट? यानी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस। ओके, देन वी सॉ डिस्क्रीट टाइम, कंटिन्यूअस टाइम, फर्क है। देन आई आल्सो एक्सप्लेन डिजिटल, जो कि अच्छी टर्म है। यू विल आल्सो वर्क विद दिस थिंग अ लॉट कॉल्ड इम्पल्स। वैसे क्या होता है इम्पल्स? इंग्लिश में क्या होता है? सर एक वो होता है नहीं एक्ट करने का, वो एक सडन रिएक्शन, सडन रिएक्शन, एक इम्पल्सिव रिएक्शन, इम्पल्सिव बिहेवियर, अर्ज आती है कुछ टाइम है। तो impulse, that's in English of course. Now we want to come to our side, right? So we are right, sudden strong wish to do something, that's in English, yes, or a spoken language. For us, an impulse is, from a signal system perspective, sometimes we want to give a very brief touch to a system. Okay, हल्का सा टच देते हैं और देखते हैं कि रिएक्शन क्या आता है। वो जो टच है ना, हल्का सा इनपुट दे के छोड़ दिया, ये इम्पल्स है, एंड वी विल सी दैट मैथमेटिकली लेटर। ये आएगा चैप्टर 1 में डिटेल में, बट कीप इन माइंड दैट इट इज़ वन ऑफ द इनपुट्स वी यूज़ टू एनालाइज सिस्टम्स। और ये आपने ऑलरेडी यूज़ किया है अभी पिछले स्लाइड्स में। कहाँ पे था? सही है, डिस्क्रीट सिग्नल होता है सर वो पेंसिल वाला, पेंसिल पेंसिल हल्का सा आपने उसको नाच दे के देखा कि स्टेबल है या अनस्टेबल है? ऐसे ही है ना, ये बेचारा अनस्टेबल था, वो देखे क्यों था ये अनस्टेबल? वो ये जो उससे फोर्स उस पे इतनी स्ट्रांग थिन आइस पे चल नींद आ रही थी सर उस पे ये उसी पे है। मुझे कहा नकली आए सर उस पे फोर्स भी ज्यादा स्ट्रांग अगर लग जाए तो बेचारा गिर सकता है। हाँ वो भी होता है, बिल्कुल। वो फिर आप देखेंगे ना, लेकिन इट्स द टच एंड गो थिंग, या हल्का सा आप इम्पल्स देते हैं। जाहिर है आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएं, वो जो पेंटिंग वाली मिसाल है ना, उस पर भी आप बहुत ज़्यादा लगाएं, वो भी बेचारी अनस्टेबल, राइट? सो यू हैव टू कीप योर impulses in control, right? किसी आता, so you have to work with that. So impulse is a brief
input given to a system जो फौरन दे के हटा लिया जाता है. Then you see what happens, like you saw this here. Mathematically, for the continuous time case, we write impulse like this. We define it by its properties. कभी देखा है impulse function? Direct देखा है आपका impulse function? नहीं? Okay. So you आप functions तो पता है ना मैथ? Impulse function से हमने पढ़ा है. पढ़ा है कहाँ? सर्किट 2 हाँ पढ़ा है ना. तो बेसिकली इसकी अपनी कोई डेफिनेशन नहीं होती. It is defined by its properties. Pure mathematics does not accept it as a function. इसमें कुछ मसले हैं. But it's very useful for our purposes, so we go for it anyway. So impulse in continuous time, often we draw it as just an arrow. ठीक है? और इसकी ये दो any signal that satisfies these two conditions for us is an impulse. क्या है ये दो conditions क्या कह रही? So what's the first condition saying about this signal? T cannot be 0. नहीं T can be 0. मना तो नहीं है. मैथ्स की इक्वेशन गलत पढ़ा. किसी ने मना कर दिया T को 0. वो फंक्शन 0 है जब T 0 हाँ नहीं ये है ना. ये तो नहीं है. है. बीच में 1/t तो नहीं लिखा हुआ ना हमने. T cannot be 0. Right. So what he's saying is that this is a function that exists only at 0. Does not exist anywhere else. ऐसे ही है. To the left of 0 it wasn't there. या ये था ना, ये एकदम आता है और चला जाता है. राइट. पहले नहीं था, बाद में भी नहीं है. राइट. सो ये जिस वक्त इसको ये टच करता है ना वो T 0 है ये, और बस खत्म हो गया. ठीक. सो T it only exists at T equal to 0. So it doesn't exist on the left or the right. एक चीज़ ये. दूसरी कंडीशन क्या है? We don't say what its actual value is at T equal to 0. We only say it doesn't exist anywhere else, but it exists only at T equal to 0. Then we don't say what its value is. What we say is, क्या कह रहे हैं, इसका area under this function or signal should always be 1. Unity area होना चाहिए. सर ये नीचे T not equal to 0 का क्या मतलब है? It's saying delta T equals 0 when T is not equal to 0. Right? So the signal is 0, doesn't exist, or is equal to 0, sorry, when T is not 0. That means it has a value, non-zero value only at T equals 0. Second condition is saying the area under it should be 1. Then to meet these two conditions you can draw it in many ways. Often they teach it like this, right? क्या होता है वो कि एक very thin rectangle है. They are trying to visualize how this may look. पर इसका कोई खास फ़ायदा ऐसा है नहीं. मैं आपको बता दूँ वजह. ये as epsilon goes to 0, 1 over epsilon goes up, and this thing becomes infinitesimally small, but the product is 1. Total area 1 रहता है. It satisfies that condition, but you can satisfy this condition with a triangle also. Appropriate size का लें triangle, और उसमें भी आप ये करवा सकते. तो इसकी shape असल में पता नहीं क्या कुछ हो सकती है. As long as these two properties are met, we don't care कि इसकी actual shape क्या है. तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको बनाते ही नहीं है. हम क्या करते हैं, arrow बना देते हैं. This is delta T. ये जो arrow है ना, okay. Sometimes they like to show you like that. It's fine. It could be a triangle or कुछ और करके आ जाए. Doesn't matter. So it is so short कि वो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा उस दौरान क्या होना. सर जी हमारी क्लास है. आपकी क्लास है? किस चीज़ की क्लास? मॉडलिंग प्रोसेसेस. हाँ तो अभी 11:30 12:30 सर 12:40 पे अभी जाए ना उसको. 5 minutes है. सर वही ना, extra 25 minutes हम लोग करते हैं. सर मैंने इनको पहले बता दिया था 12:45 के बाद क्लास. हाँ लेकिन आगदा के लिए आप आगे करा लेना उसको, क्योंकि ज़ाहिर आई विल करा लो, 50 में करा.
ठीक है सर। हाँ थोड़ा सा आज रुक गए थे, लेकिन ज़ाहिर है वी विल नीड टू यूज़ दिस टाइम ना। अभी कितना हुआ है, 12:40 हो रहे हैं ना, सो इट्स कितने 60-70 मिनट्स। 70 minutes हो गए। 75 अच्छा 5 मिनट का 5 मिनट आप 5 मिनट यार वो आगे करा, कौन पढ़ाते? सर मैंने आज अच्छा उनसे आप भी बात कर लें, मैं भी कह रही थी 5 मिनट आगे कर लें थोड़ा सा। 50 वैसे ही 5 रिकॉर्डिंग हो रही है राइट। Okay, so we will go to the next one, inshallah. More of this later. I think this is already enough. So I'll stop the recording, and I need to maybe edit out